हे गाइस, खुशहाल हियर एंड वंस अगेन आपका मेरा वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा ऐसे यूजलेस भी आप कह सकते हो, बट एक्चुअली अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी ऐसा सीरीज लेके आता रहूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले CoolerMaster का MB511 परचेस किया था और प्रीवियसली मैं सर्कल का CC830 यूज़ कर रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, मतलब कि अब तक मेरा काम चल रहा था। फिर मैंने उसमें लिक्विड कूलर लगाया और फिर अपग्रेडेशन का भूत चढ़ गया, क्योंकि सर्कल का CC830 जो है लिक्विड कूलर्स को ऐसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाता है। तो काफ़ी अच्छा टाइम था मेरा कैबिनेट को अपग्रेड करने का। तो मैंने फाइनली CoolerMaster का MasterBox MB511 परचेस कर लिया, RGB वाला एडिशन, और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक रिव्यू बनाया है। और अगर आप वो वीडियो मिस कर गए हो या फिर आप देखना चाहते हो वो वाला वीडियो, वो केस के बारे में जानना चाहते हो, तो ऊपर एक कार्ड डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा जो सर्कल का CC830 कैबिनेट है वहाँ से सारा का सारा ऐसे पार्ट्स पुर्जा वर्जा निकाल के अपना जो नया कैबिनेट है उसमें फिट करेंगे। थोड़ा बहुत ऐसे असेंबलिंग में कह सकते हो इस वीडियो को। और ये काफ़ी एक अच्छा कैबिनेट है, मतलब कि अगर आपको परफॉर्मेंस वाला कैबिनेट चाहिए जहाँ पे आपको मतलब एयर फ्लो अच्छा मिले, फिर ऐसे लुक्स भी बहुत ही बढ़िया है इसका, तो आप ये वाला कैबिनेट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एक और बात, यहाँ पे मैं ये वाला वीडियो जो है टाइम लैप्स में बिल्ड करने वाला हूँ। उतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है कि मतलब बहुत ऐसे लेंदी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे टाइम लैप्स में, तो यहाँ पे जितना सारी पार्ट्स है मैंने सर्कल का CC830 से खोल के MB511 में लगाया है। तो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे टाइम लैप्स में देखने को मिलेगा और आप लोगों का शायद से टाइम भी बच जाएगा और शायद से कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। एक और बात, मैंने आज हेयर कटिंग किया है, तो अगर आपको मतलब ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हेयर कट बहुत ही जरूरी था। तो नाउ देन लेट्स गेट स्टार्टेड। That booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me. Don't move that booty, shake it for me. Move that booty, shake it for me. Booty. Booty. Don't move that booty, shake it for me. Booty. Booty. Move that booty. Don't move that booty. Shake it for me. Don't move that booty. Shake it for me.
move that booty. Shake it for me. Booty. Booty. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Booty. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Shake it for me. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Shake it for me. Shake it for me. Shake it for me. Girl, move that booty. Girl, move that booty. Girl, move that booty. Shake it for me. 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 Shake it for me. Booty. Girl, move that booty. Girl, move that booty. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Booty. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Booty. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Shake it for me. Girl, move that booty. Shake it for me. Booty. Shake it for me. Shake it for me. Shake it for me. Girl, move that booty. सो दैट वाज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही गया होगा, मतलब कि ऐसे केबल मैनेजमेंट कैसे करते हैं या फिर ग्राफिक कार्ड को कैसे डालते हैं। मेरा मतलब कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आगे भी अगर आप ऐसा वीडियोस देखना चाहते हो, मैं ऐसा वीडियोस लेके आता रहूँगा। और बस इतना ही आज की वीडियो में, और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।